and welcome to Amrita Raichand's Chef and Beyond. We are on the series of strawberry recipes. और आज क्या बन रहा है मेरे किचन में? Well, today I am making a cheesecake. But hold on, this is a strawberry cheesecake in a glass. Yes, let's begin. So सबसे पहले we are going to take some digestive biscuits and grind them in a mixer grinder. अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. कई बार लोग melted butter डालते हैं after grinding the biscuits. But I'm not going to do that. We are going to just add some softened butter to the mixer grinder itself. और जब इसे हम साथ में grind करेंगे, तो we're going to get the texture that we want. Here you go. So basically, when the whole biscuit mixture comes together in your hand like this, आप आराम से बॉल बना सके, इसका मतलब this is the right consistency. Alright, now यहाँ मेरे पास 2 glasses हैं, जिसमें मैं अपने cheese cake को set करने वाली हूँ. Now I'm going to take this mixture and now I'm going to just, with the help of a spoon, अच्छे से इसका base में set कर दूँगी. अब इसी तरह हम cheese cake के base को दूसरे glass में भी set कर लेंगे. Alright, now I'm going to put these in the fridge so they can set nicely. तब तक हम filling बना लेंगे. Alright, now let's make the filling. Now filling 2 हिस्सों में बनेगा. पहले we are going to beat some fresh cream along with some sugar. आप चाहें तो whipping cream भी use कर सकते हैं, but usually घर में whipping cream available होता नहीं है, तो I just like to use the easy way out with ingredients that are easily available. तो चलिए इसे sugar डालने से पहले थोड़ा सा beat कर लेते हैं. थोड़ा बीट करने के बाद इसमें हम आइसिंग शुगर डाल देंगे to make the cream nice and thick. All right, so हमारा whipped cream is ready. Keep it on the side. Now we move on to our cream cheese mixture. So cream cheese is really important in this recipe. वरना आपको वो classic cheese cake का flavor नहीं आएगा, taste नहीं आएगा, texture नहीं आएगा. तो it's really important कि आप क्रीम चीज़ लें. ये आसानी से आपको मिल जाता है. You can buy the most expensive one or the most reasonable one. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. But ensure that you get cream cheese. So now I'm adding the remaining sugar to our cream cheese mixture. साथ ही इसमें पड़ेगा vanilla essence, some zest of lemon. अब इसे हम बीट कर लेंगे. Alright, तो अब ये हमारा क्रीम चीज़ का मिक्सचर रेडी हो गया. अब हम इस सॉफ्ट पीक वाले क्रीम को मिला देंगे हमारे क्रीम चीज़ के मिक्सचर में. ये दोनों they should come together nicely. इसकी airiness जानी नहीं चाहिए, so just handle it delicately. Alright, time to add some strawberries to our cheesecake filling. So just gonna get rid of the leaves and the stem. I'm just going to thinly slice these strawberries. Okay. अब यह आपके ऊपर है कि आप स्ट्रॉबेरी के पीसेस या स्लाइसेस को कितना बड़ा या कितना छोटा रखना चाहते हैं. I like to keep them a little bigger because just for that mouthful of strawberries. So now I'm just going to add this to the bowl of my cream cheese mixture. Oh, look at that. So beautiful. It's looking so beautiful. बस अब इस filling को हमने भरना है हमारे ग्लास में, which we have put in the fridge for setting of the base. तो मैं उसे लेके आती हूँ. Right. Here it is. And this is nicely set. देखिए ये बिल्कुल नहीं गिर रहा है. That's because जो butter इसके अंदर है, that has solidified and brought the biscuit mixture together. And अब with the help of a spoon, ये सारी filling को हम डाल देंगे हमारे ग्लास में. Now with the help of an offset spatula, मैं इसे even out कर दूंगी. अब इसी तरह we're going to fill the other glass too.
लुकिंग लवली। अब इसे हमें सेट करना है फ्रिज में करीब 2 से 3 घंटे के लिए मिनिमम, ताकि इट बिकम्स दैट लाइक अ केक, ताकि when you eat into it you feel like you having a cheesecake but out of a glass. So let me get the set glasses and इसे मैं सेट करने के लिए अंदर रख देती हूँ। Here you go, the set cheesecake is ready. अब ये देखिए, you can see the layers so beautifully and इसे आप जब उल्टा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब now you can actually just dig into it just like this. लेकिन एक चीज केक का क्लासिक फीचर होता है the topping of compote. अब स्ट्रॉबेरी कंपोट मैंने पहले से ही तैयार करके रखी है and the recipe has been shown in the strawberry ice cream video. तो check it out. Here I have a nice sprig of mint, add a pop of color to it. Alright, so my strawberry cheesecake in a glass is ready. I hope you like this recipe and I really hope आप इसे बनाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. And don't forget to subscribe to Amrita Raichand, Chef and Beyond, because as you know, I keep coming up with lots more exciting recipes just like these. तो चलिए मिलते हैं जल्दी with another exciting strawberry recipe. Bye!